We have the finance minister, we have the entire budget team, the men and women who make the union budget there outside Kartavya Bhavan, if I'm not mistaken, as they are about to now enter and present first table and then present the union budget. That's the entire budget team. We have the Chief Economic Advisor, we have MOS Finance, we have the Expenditure Secretary, we have the Financial Services Secretary, the Revenue Secretary, and we of course have one miss this time around, who is the Finance Secretary. This is one union budget where we don't have the Finance Secretary, part of the budget making process. Remember, Finance Secretary Sanjay Malhotra, former Finance Secretary Sanjay Malhotra, now the RBI Governor. So the rupee devaluation is also something that, Priyanka, we might spend a minute or two on, but usse pehle हम टैक्स की बात कर रहे हैं और टैक्स के अंदर एक और कंपोनेंट है, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और अब की बार काफी ये भी चर्चा चल रही है प्रियंका, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और चर्चा ये भी चल रही है कि क्या फिक्स्ड डिपॉजिट्स का टैक्सेशन बदला जाए ताकि बैंक्स को भी थोड़ा लिक्विडिटी मिले। बिल्कुल, एसबीआई के प्रमुख जो है सीएस शेट्टी, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि भाई इक्विटी को इतनी आप जो है तरजीह देते हैं लेकिन बैंक डिपॉजिट को आप नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान होगा यादव सर को इन क्वेश्चंस के लिए हम ग्रिल करें, लेकिन मैं बार्नेक जी, मैं इकोनॉमिस्ट के हैट आपको कहूंगी पहनिए और मुझे ये बताइए कि भाई आपने देखा एफआईआईज की सेलिंग, हम इसका सामना करते रहे, बाजार का मूड बहुत, ट्रंप साहब, एफआईआईज, किसी ने भी बाजार को कोई खुशखबरी नहीं दी है, ठीक है। उसके ऊपर से एफडीआई की पाइपलाइन, जिस पर हम सबने अभी बात की है। अब हम बात कर रहे हैं टैक्स को, कैसे टैक्स को लेकर के जो डर है उसे हटाने की। एसटीटी को बढ़ा दिया गया पिछले बजट में। जब एलटीसीजी लाया गया था तो कहा था कि एसटीटी जो है वो नहीं, फिर भी लेकिन हम डबल टैक्सेशन लग रहा है। और ये टैक्स जो है, समीर अरोड़ा हीलियोस कैपिटल के, उन्होंने इस बात को ट्वीट किया कि भाई हम एफआईआईज को लाने के लिए हमें कुछ करना होगा, बाजार का मूड बदलने के लिए कुछ करना होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी की नब्ज का एक वो बहुत अहम हिस्सा है। तो एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एलटीसीजी और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स, इस पर आपको लगता है सरकार इसे हाथ लगाएगी या कहेगी रहने दो, अगले बजट में देखेंगे? देखिए, मेरा बहुत शिकायत है सरकार से एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीसी पे। लास्ट 2-3 साल इंडियन मार्केट्स आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फॉर इवन रिटेल इन्वेस्टर्स। आप देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैव कम डाउन फ्रॉम 15-20% टू नाउ अंडर 10%। इंडियन बाजार सबसे घटिया परफॉर्मिंग बाजार है इफ यू लुक एट कंपेयर टू इवन डेवलप्ड मार्केट्स। एंड सबसे बड़ा इशू जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द रुपी एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्दर डिवैल्यूएशन। While the government spins, and the economic survey also spun that the rupee is very attractive for investors to invest, अगर रुपी का वैल्यू और गिर जाए तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, राइट? सो करेंसी स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एलटीसीजी में कोई आशा नहीं है। सरकार इधर उधर थोड़ा टिंकर करेगी। इनफैक्ट जो मैंडरिन्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, दे ऑलवेज फाइंड वेज to add a little bit of tax burden here and there, bring more products in. But some sort of some sort of uniformity across the definition of LTCG across asset classes, or is that also asking for too much? And also, sort of getting rid of these complications around indexation benefits and this and that. I think उसको काफी हद तक पिछले बजट में कम करके, I think there has been बजट में काफी यूनिफॉर्म कर दिया है, इवन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एंड आल्सो इंडेक्सेशन चला गया। आपका एसेट क्लासेस के लिए तो अलग ही है ना अभी तक ओपी यादव जी। आपका इक्विटी मार्केट्स में 1 साल है, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अलग है। फिक्स्ड डिपॉजिट तो असेट है नहीं, राइट? अच्छा, ओके। बाकी के लिए 2 साल का पीरियड है, एंड लिमिटेड जो है उनके लिए 3 इयर्स है। लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। फिजिकल गोल्ड के लिए अलग टैक्सेशन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड आप फंड ऑफ फंड में कर रहे हैं उसके लिए अलग है, ईटीएफ में कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में हम कैसे बात नहीं करें? गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है? श्रीधर, योर टेक ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, I mean, I know you're not comfortable in Hindi, so I'm going to put this question to you in English. You think, after we saw the import duty slash on gold from 15 to 6, do we see from 6 to going beyond, or will FM take a stand and increase the duty? Well, I can't pretend to know her mind, but I think, Priyanka, the most important thing for people to understand, and it's something I've written about more than a year ago, on why I expect the gold to be in some sort of a secular bull run in this time, because of the global uncertainty and the debasement, as we call it, of the fiat currency, which is a printed currency. The kind of money that US has printed, the debt it's running now at $38 trillion.
there is at some level a fundamental loss of faith which investors are experiencing when it comes to fiat currency. They don't feel that their money is safe, the value of the money is going to remain safe. So historically what humans have done is, in moments of uncertainty and when they fear about the overall security of their wealth, they typically move their money into gold. And that's what we are seeing happening. And I don't see anything going forward, given the geopolitical environment, which tells me that the uncertainty or the fear of global investors is going to go away. There's fear not just on the trade front, but there's real issue on war. Now we have Iran also. That whole issue could flare up anytime. We don't know. Ukraine hasn't been settled yet. So there is a lot of uncertainty. In this environment, I think you can't blame investors if they seek safety in gold. And why should the Indian investor behave any differently? In fact, the Indian investor has historically been very savvy. Our grandmothers, for example, they've been the smartest of investors, I would say, who always told their sons, "Beti ke liye lo, gold lo. You should invest in gold." And Indian households, if you include the government holding and the private holding in India, we are, China and India are probably the two largest gold holders. I think if numbers are to be believed, the household sort of, of India, what's more tangible household 35,000 tons are almost as much as the GDP of the country. Well, we have about 6 minutes to go now on the clock for the union budget, and we have 6 experts with us. I thought, let's give all of them 1 minute each to really tell us at this point, Priyanka, that one specific tangible expectation from Budget 2026, and if it doesn't come through, it is going to hurt them, trouble them, and make them upset. Let's first begin with Vibha Dhawan. Vibha Dhawan, 1 minute, one expectation that you have your eyes peeled on Budget 2026 for. Well, I'll say research budget for energy transition, that should be increased. Okay, budget for energy transition, that must be increased, is the word coming in. Dilip Chenoy, industry expectation, auto expectation, crypto expectation, because you have a vast experience having dealt with all these different sort of sectors. One expectation that you think you have as Dilip Chenoy, what is that one expectation you have from budget 2026? I think that there should be a great focus on manufacturing and jobs in this budget. And, Karthik, I'll be failing in my duty if I don't say something on the virtual digital assets. Okay. I think it's high time we reduce the TDS and at least allowed set-off of losses in this sector. Forget the taxation rate, but reducing the TDS at least from 1% to 0.1% to 0.1% and allowing set-off of losses, and this is what we expect. Right, offsetting of losses and reduction of TDS. I think fair expectations when it comes to virtual digital assets. Siddharth Pai, linked to VDAs is also this entire sort of boom in digital, in technology, in AI, in GCCs, and of course in semiconductors, which are likely to power this entire AI revolution as well as the entire production revolution in the country. One expectation from budget 2026. I think the 1 lakh crore RDI fund needs to actually be actioned out and budgeted out as well. We've heard about this for quite some time, but we don't know what the yearly budgetary allocation is going to be. Front load a large amount of it, get to know the bureaucracy, allow this capital to end up flowing. That's the only way we end up seeing a benefit. And ESOP taxation. I think for 11 years we've been asking ESOP taxation. That comes in, AI engineers will come back. We will actually see an AI renaissance in this country.